We are doing trigonometric transformations, if you remember, and we have completed 4 problems also. 7 marks questions, 4 problems completed. Now this is the 5th problem. 5th problem. So I am writing the question on board, so that's why the video is off. So please wait. You have to prove that sin square a plus sin square b minus sin square c equal to 4 sin a sin b cos c. 4 sin a sin b cos c. So listen here, a plus b plus c 180. Taking LHS. Assalamu alaikum sir. Walaikum salam. Yes. Sin square a plus sin square b minus sin square c. I hope you know idea about this formula. Yes sir. Sin square a minus sin square b. Cos square a minus sin square b ले लेंगे. Cos square a minus sin square b. Formula बोलो. Cos a plus b into cos a minus b. Cos a minus. Yes sir. ये फार्मूला ही यूज कर दूं मैं. ये मॉडल को ये एक ही फार्मूला यूज कर दूं मैं. Cos square a minus sin square b. So मेरे को a के साथ cos चाहिए, cos square a, और b के साथ sin चाहिए, sin square b. So cos square a चाहिए, इसलिए sin square a को 1 minus cos 1 minus sin cos square है. Okay, good. अच्छा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो. cos square a minus sin square b होता. Yes sir. Minus sin square c. And now we can replace this formula cos a plus b into cos a minus b. We can replace and then cos sin square c. Now a plus b you can write as, what should I write a plus b, because a plus b plus c 180. क्या लिखना है a plus b को? 180 minus c. क्या बोलते हैं वहाँ? 180 minus c लिखना है. और देखो 180 minus c means second quadrant. So what will be cos 180 minus c? Minus cos c. Minus plus हो जाता sir. That's very good. Minus cos c आता. So minus of minus plus cos c हो जाता. ये हो गया cos a minus b. तो ये cos c हो गया, तो इसको भी cos c में चेंज कर लेंगे. 1 minus cos square c बोल के लिख लेते. So that this 1 cancel and cos c common. You get cos of a minus b. Minus into minus plus cos c will be there because cos square c से cos c common आ गया. और बताइए cos c into cos of a minus b, हाँ, plus cos, जैसे 180 minus a plus b. जैसे a plus b को 180 minus c लिखे, c को भी 180 minus a plus b लिख सकते हैं ना. और yes, फिर sir. एक बार वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट cos is negative, so cos c बोलो cos of a minus b, ये नेगेटिव होता, माइनस cos of a plus b. ना एक्चुअली अपने को फार्मूला रिप्लेस करना है इधर. ये जो ब्रैकेट में जो दिख रहा है एक फार्मूला है, उसको रिप्लेस करना. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 sin a sin b. वेरी गुड. मैं क्या बोल रहा हूँ? -2 sin. आंसर देख के भी आप गेस कर सकते हैं व्हाट इट इज. So as you said, it is 2 sin a sin b only. So simple problems. Get ready for one more before taking screenshot. Sir. Yes. Sir, उधर 2 sin a sin b cos c आता ना sir? हाँ, cos c आता ना, अरे आया ना. अच्छा ये हाँ 2 आता, sorry 4 नहीं आता, 2 आता. 2 not 4. Even problem में भी change कर. 2 sin a sin b cos c. Okay, मैं problem ले रहा हूँ. Second problem ले रहा हूँ. Wait.
So video off रहता. So okay, cos square a plus cos square b minus cos square c है next problem. Cos square a plus cos square b minus cos square c. To prove that it is equal to 1 minus 2 sin a sin b cos c. 1 minus 2 sin a sin b cos c. ये भी कर लेंगे. a plus b plus c 180. 1 second. 180. So LHS cos square a plus cos square b minus cos square c. Cos square a we keep it same. This cos square b will write as 1 minus sin square b and then minus cos square b. So 1 plus cos square a minus sin square b, as I have suggested, it is cos a plus b into cos of a minus b and then minus cos square c. A plus b, of course, 180 minus c, 180 minus c into cos of a minus b minus cos square c. Cos 180 minus c minus cos c, ये पूरे आप बोल रहे थे. So it is minus cos square c. From those two minus common, 1 minus cos c, minus cos c common. क्या रहता है? Cos of a minus b plus आता ना? Yes sir. Plus आता. फिर c के जगह cos of a minus b, फिर c के जगह 180 minus a plus b लिख देना. A plus b. फिर minus 1 minus cos c into cos of a minus b, ये नेगेटिव हो जाता minus cos of a plus b. 1 minus cos c into 2 sin a sin b होता. 2 sin a sin b होता is equal to 1 minus 2 sin a sin b cos c होता. That is this. Now these two you can take the screenshot. Then we'll go to the next problem. Jaldi. Screenshot done. Okay. Seventh problem now. Seventh problem. I have to see and write, so video will be off. So seventh problem I'm writing. ABC or angles of triangle. We have to prove that sin square a by 2. So a plus b plus c 180. To prove that sin square a by 2 plus sin square b by 2 minus sin square c by 2. This is what we have to prove as 1 minus 2 cos psi. 1 minus 2 cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2. देखो मैं ये जस्ट लेना 2 divided by 2. sin square a by 2 plus sin square b by 2 minus sin square c. Sin square c by 2. So sin square a by 2 I'll write as 1 minus cos square a by 2 plus sin square b by 2 minus sin square c by 2. Minus common cos square a by 2 minus sin square b by 2. See, those who got idea about this sin square b by 2 minus sin square c by 2 is sin b plus c into sin b minus c. You can go ahead, no problem. Okay, so that's what I want to say. This is going to be cos a plus b into a minus b, but by 2 is there. So cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2, isn't it? Yes sir. जैसे a plus b plus c 180 हुआ तो उससे पहले भी करें a plus b by 2 plus c by 2 will be 90. So 1 minus cos 90 Yes, minus c by 2 cos a minus b by 2 minus sin square c by 2
90 minus first quadrant. sin c by First 2. quadrant, all are positive. So you get sin na cos 90 minus sin. Yes, sir. Yes, So sir. this is cos a minus b by 2 minus sin square c by 2. Sin c by 2 common, sir. 1 minus sin c by 2 common. Cos a minus b by 2 minus sin c by 2 होता हो. Minus sin c by 2 common. So 1 minus sin c by 2 cos of a minus b by 2 Minus cos a plus b by 2. sin of c by 2 is 90 minus a plus b by 2. 90 minus a plus b by 2. 1 minus sin c by 2 बोलना था cos of a minus b by 2 minus a होता cos of a plus b by 2, correct? Isn't it? So now guess what should be there in the bracket to get the answer. So this is what we have to replace to get the answer. So what it should be? 2 sin a by 2 sin b by 2. Correct? Actually 2 sin a by 2 sin b by 2 आना चाहिए. I will check once if there is anything wrong I have written. Wait. I'll check it once. सर माइनस माइनस प्लस होता है. कौन सा माइनस माइनस प्लस इधर का? अच्छा ये माइनस कॉमन लिया क्या? प्लस होता सही है. प्लस है 2 cos a by 2 cos b by 2 सही है. प्लस होता इट इज 1 minus 2 cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2 RHS. Eighth problem. I'll take one more question. Wait. In terms of cos now, to prove that cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2 equal to 2 into 1 plus sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 बोल के दिया. 1 plus sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 बोल के दिया. So LHS cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2. So again cos square a by 2 plus 1 minus sin square b by 2 लिखा मैं. I want to use the same formula again and again. So 1 plus ये दोनों का formula cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2. Correct? Plus cos square c by 2. बोलो माँ a plus b by 2 90 minus c by 2 cos a minus b by 2 plus cos square c by 2 90 minus are you listening sin c by 2. अब cos square c sin square c cos square c by 2 को 1 minus sin square c by 2 लिखे तो नहीं काम आता ना. तो cos square c by 2 को लिखेंगे 1 minus sin square c by 2. So this 1 and 1 becomes 2 sin c by 2 common. Cos a minus b by 2 minus sin c by 2 will be there in the bracket. And now that c by 2 you have to write as so 2 plus sin c by 2 into cos of a minus b by 2 minus sin of c by 2 is 90 minus a plus b by 2. C by 2 90 minus. So that means cos. So cos of a minus b by 2 minus cos of a plus b by 2. अभी बताइए क्या लिखना चाहिए ब्रैकेट में so that you can get the answer. 2 sin c by 2, 2 sin a by 2, sin b by 2, isn't it? And from those two common. 1 plus sin a by 2, sin b by 2, sin c by 2. RHS. You take the screenshot. हो गया तो बोलो. सर इसको into 2 और by 2 करके कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं.
हो गया? स्क्रीनशॉट। सर थोड़ा टाइम दो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। टोटल कितने सम से देखो? 8 I think, ना? 8 completed. Ninth problem. Ninth problem. Just a minute. Ninth problem. I'm going with the next problem. A plus B plus C pi by 2. A plus B plus C pi by 2. Prove that cos 2A plus cos 2B plus cos 2C equal to 1 plus 4 sin A sin B sin C. 1 plus 4 sin A sin B sin C. A plus B plus C 90. LHS cos 2A plus cos 2B plus cos 2C. बोलो आपका क्या आंसर होगा? cos A plus B, 2 cos A plus B, cos A minus B. हाँ, cos C plus cos D फार्मूला बोल रहे हैं ना? जी सर। cos C plus cos Yes, D sir. फार्मूला ना? So 2 cos C plus D by 2, so A plus B cos of Cos A minus B. Right. फिर A plus B को क्या लिखना? 90 minus C 90 लिखना। minus C. Cos 2C. What will be cos 90 minus C? 2 sin C. Sin C. Sin C. Sin So C. 2 sin C cos of A minus B. So इसको भी sin में convert करेंगे। 1 minus 2 sin square C. 1 minus 2 sin square C. सही है? 1 Yes, sir. plus sin 2 C sin common. C common. 2 sin C common. Cos A of minus B minus sin minus C होगा। sin सर C. A plus B को 180 माइनस C लिखना ना सर। उधर pi by 2 है A plus B plus नहीं, C. A plus B plus C pi by 2 दिया, 90 दिया। देख लिए? फिर C को क्या लिखते हैं? 90 minus A plus B ना? Yes, sir. जी सर। Cos A plus. तो 1 plus 2 sin C cos of A minus B minus cos of A plus B हुआ। तो उसके ब्रैकेट में क्या होना चाहिए कि आंसर में तो देख लो 2 sin C into, so in the bracket what should be in the bracket to get the answer? देख लो रिमेनिंग आंसर क्या चाहिए? 2 sin A sin B चाहिए। So that's why it is 1 plus 4 sin A sin B sin C. RHS. 10th problem. A plus B plus C 3 pi by 2. ये है next one. I will write the question once. A plus B plus C 3 pi by 2. Sin 2A plus sin 2B minus sin 2C minus 4 sin A sin B cos C minus 4 sin A sin B cos C LHS sin 2A plus sin 2B minus sin 2C
sin 2a plus sin 2b बोलो माँ 2 sin a plus b 2 sin a plus b cos a cos a minus minus b करेक्ट cos a yes, minus b minus 2 sin c cos c है ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं और a plus b क्या लिखना मानो 270 minus c देखो माँ a plus b 270 minus c 270 minus which quadrant 2 cos c minus 2 third cos c quadrant माइनस है ना माइनस आता माइनस 2 sin c cos c दोनों में से माइनस 2 cos c कॉमन cos of a minus b plus sin c आता फिर माइनस 2 cos c into cos of a minus b plus sin c c can be written as 270 minus a plus b up to 70 by this again third quadrant sign is negative minus a plus Negative. so minus 2 cos c cos of a minus b ये negative minus cos of Cos A plus B. a plus b a plus b what should be in the bracket minus 2 cos c into 2 sin a sin b minus 4 sin a sin b cos c इसका स्क्रीनशॉट ले लो हो गया ना सो 10 प्रॉब्लम्स हो गए और एक 4 प्रॉब्लम या 3 प्रॉब्लम बच के हैं आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास सर बोलो मां बोलो सर आप सिर्फ LAQs करा रहे सर ऐसा नहीं पहले LAQs करा बाद में SAQs बाद में भी ऐसे ओके सर ओके थैंक यू ये स्क्रीनशॉट्स भेजो मां PDF आई एम वेटिंग हाँ ओके